Hello, students. Today we are discussing the topic called power. In an organization, power is basically used to influence the other employees. Influence means sometimes you need to guide someone, sometimes you need to give instructions to your downwards, to your subordinates. So it doesn't mean that power is negatively, described here. Power can be imposed. If you are having power, then you can implement that powers in a positive manner also. It's not necessary that power is always related to some sort of negativity. As it mentioned that it need to influence others. If someone is inspired you, if you are influencing someone, it doesn't mean that it is plays a negative role. One, these are some sort of definitions that it's an potential ability to influence other. आप कैसे दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये किसी भी इंडिविजुअल की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, हाउ यू इन्फ्लुएंस. नेक्स्ट इज एक्विजिशन ऑफ पावर. मीन्स these are some points through which power can be given to any individual. Power can be can be given by superior, by subordinates also. If I'm and my employer working on the same position, I give my power to another one also. So these are some factors through which powers can be transferred. Yeah, powers should be there in an individual. Number one is centrality, uncertainty, and substitutability. Number one is centrality. Centrality, as the name, emphasis on central or center. So the person who is in the center of the organization, he or she is having maximum powers because he is the he is the person who is having maximum powers. So he can guide to superiors also, he can guide to subordinate also, he can give instructions also. So centrality means the person who is having maximum power. Okay. Next is scarcity. Scarcity means something which is less in number. अगर किसी भी चीज की कमी है तो इट मीन्स उसकी स्कार्सिटी है. तो अब केस आता है व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग मिनिमम रिसोर्सेज. if organization is having a scarcity in terms of resources also, so organization need to depend upon other organizations or other departments to fulfill that loss of resources. So scarcity, at the time of scarcity, power should be there and power must be there to a person so that the scarcity can be fulfilled. Next one is uncertainty. Uncertainty means all of a sudden some powers will be given to you. Maybe some sort of change in organizational policies, some sort of change in departments, some like supply of resources, fall in demand of companies, product, change in government policies. Maybe all of sudden जो changes होते हैं उस टाइम पर कई बार ऐसा होता है कि आपके पास पावर आ जाती है या फिर ऑल ऑफ सडन उस चेंज के हिसाब से आपको पावर दी गई है. सब्स्टिट्यूबिलिटी. सब्स्टिट्यूटेबिलिटी का नाम इससे बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है कि सब्स्टिट्यूट हैं आप, या वो पावर आपको कुछ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए दी गई है. फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक बॉस होता है, प्रिंसिपल होता है. तो वो प्रिंसिपल अगर 15 डेज या 20 डेज या 30 डेज के लिए ऑर्गेनाइजेशन से गए हैं फॉर सम वर्क, तो उस टाइम पर एक एक्टिंग प्रिंसिपल बन जाएगा. एक्टिंग प्रिंसिपल वो होता है जो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए सिर्फ उनके वर्क को हैंडल करता है. तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि जो पर्सन अभी नहीं है उसकी जगह ये टास्क कोई और कंप्लीट करेगा. तो उस टाइम पर वो जो पर्सन 15-20 दिन या 1 मंथ के लिए जो पावर्स को यूज करेगा वो सब्स्टिट्यूशन पावर्स हैं. ओके, you can go through this PPT also so that things will be more clear. The essence of power lies in having control over the behavior of others. Definitely, power can be checked. Power can be, seen by the behavior of others. आप देखते होंगे जिसके पास ज्यादा पावर होती है उसका बिहेवियर भी थोड़ा चेंज होता है. हाँ, लोगों का एटीट्यूड उस पर्सन की के लिए डिफरेंट होता है हु इज हैविंग मोर पावर. सो अ मैनेजर
Managerial powers may be measured in terms of his ability, like give reward, promise reward, threaten to withdraw current rewards, threatening or punishment. If someone is giving punishment to downwards to some subordinate, so this is called threatening and punishment. If you are, you are saying that complete this work otherwise I'll punish you, तो आप ऐसा कैसे कह पा रहे हो? इसलिए कह पा रहे हो क्योंकि आपके पास पावर है. कई बार ऐसा होता है कि यू आर promising someone, promising something that I'll give you this much of increment if you complete this task. तो ये आप कैसे कह पा रहे हैं? आप इसलिए कह पा रहे हैं because you are having powers. आप किसी को reward दे रहे हो. फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन में टारगेट अचीव करने के लिए आपने सुना होगा एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, स्टार ऑफ द वीक. तो ये सब क्या है? उनको रिकॉग्निशन देना, उनको रिवॉर्ड देना. तो ये आप तभी दे पाते हैं टू योर एम्प्लॉयज इफ यू आर हैविंग पावर. These are some sources of power, or I can say types of power. Like positional power, जिसको हम क्लियरली बोलते हैं. पोजिशनल पावर क्या होती है? एक फॉर्मल पावर होती है जिसमें रिवार्ड, कोएर्सिव पावर, लेगिटिमेट पावर जिसको पोजीशन पावर भी कहते हैं, इंफॉर्मेशन पावर, और ये एक इनफॉर्मल तरीका है. इनफॉर्मल में आती है एक्सपर्ट पावर, रेफरेंट पावर एंड चेरिशमेटिक पावर. वन बाय वन वी विल डिस्कस दिस. देखिए, सबसे पहले आती है लेगिटिमेट पावर. लेगिटिमेट का मतलब होता है पोजीशनल पावर. किसी पोजीशन पर आप होते हैं देन ऑटोमेटिकली पावर कम्स टू यू. जैसे ही आप उस चेयर पे, उस पोजीशन पे, उस डिजिग्नेशन पर आते हैं, that power automatically given to you. Okay, that is like. Next one is reward power. If you are having power, then you can give the benefit of that power to the subordinates. Like आप किसी को प्रमोशन दे रहे हैं, आप किसी का परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं. कोई कहता है कि सर आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस टाइम पीरियड, शुड आई कैन यू एक्सटेंड माई टाइम फ्रॉम 9 to 10? 9 o'clock I am not comfortable to come to the organization, should you extend my time? तो ये क्या है? ये रिवॉर्ड पावर है. आप कई बार एम्प्लॉयज के आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए यू आर यूजिंग दैट सॉर्ट ऑफ टेक्निक. कोएर्सिव पावर, इट इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पनिशमेंट्स. देखिए, ये बहुत क्लियर है कि व्हेन आउटपुट इज नॉट गिवन बाय द एम्प्लॉयज, दिस इज द राइट वे टू कैरी ऑन द एम्प्लॉयज. बट employee is not able to give its best, तो क्या होता है? That is, अब उसको threaten किया जाता है. उसको threats आप देते हो. threats देते हो तो क्लियरली होता है कि या तो आप उसको पनिश कर दो या आप उसको डराओ. तो डराने से अच्छा होता है कि अगर उसने कोई टास्क कंप्लीट नहीं की है देन यू विल हैव टू गिव पनिशमेंट टू हिम और हर. तो ये क्या है? दैट इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पनिशमेंट्स. उनको डराना, उनको पनिशमेंट की सिचुएशन तक लेके जाना, ये कोएर्सिव पावर होती है. हर बॉस, हर सीनियर इस पावर का यूज नहीं करता है. द मोर पनिशमेंट्स अ मैनेजर कैन इम्पोज अपॉन द सबऑर्डिनेट, द स्ट्रॉन्गर इज द कोएर्सिव पावर. Naturally, if someone is giving you punishment, automatically it's very clear that person is having a lot of power. That's only he can do so. Information power. Information power is control over information flow. If someone is having control over the information, it based on the legitimate power. Legitimate means positional power. Positional power के साथ ही information power भी work करती है. It clearly means कि if someone is having position, if someone is having authority, then definitely that person have information. If I am on the top of the organization, definitely I am having much more information in comparison to other employees. So this is called information power. It relates to formal communication, definitely. Informal communication is never be a part of it. Next is common and centralized structure. Of course, centralization is there. Boss is on the top, but every power, everything is centralized. If he want to delegate powers, then only he did so. या he will do so. Otherwise, centralization is in his approach. वो चाहे तो centralization कर सकता है. तो यही सब चीजें इसमें बताई गई हैं. People in the organization who have data or knowledge that others need can make those other dependent on them. Of course, if you are having power, if you are having information, then other employees
it will depend on you. Okay. Next one is expert power. Expert power clearly shows that how much knowledge you are having. If you are a doctor, definitely you are having more power than me. If you are a lawyer, you are having a specified knowledge. So expert power means you are having a expertise. You are having a specialization knowledge that others do not have. Clear? है? It's more of a personal power rather than an organizational power. Of course it is. If someone is having expert power, then it's a personal power also. It's not an organizational power. Okay. Sooner or later, if that person is out from the organization, then that power is not from the organization. It's a person power. Okay. One is referent power. Referent power is very, like if you are giving some sort of reference to someone, that is reference power. Reference power is more of a personal nature than a positional power. It develops out of a personal admiration of others and a desire to be like that person. The stronger the association, the stronger is the power. Celebrity endorsing brands in commercials, these are the examples, but it's very clear that if I'm having some sort of, some sort of a relationship I'm sharing with my colleagues, then definitely I use some sort of reference. I put his or her name in the reference column and I'm using that power. That is called as reference power. It means you are getting benefit of others. If you are taking the name, you are taking the benefit of the name of others. That is reference. Okay. This power is also known as charismatic power and is based on the attraction exerted by one individual over another. Yeah, second line is very, 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 very clear, very, very true. Some sort of attraction exerted by one individual over another. It's something like a charismatic. It's an extension of referent power. Referent power means if I refer someone to this and this person, just go and meet the doctor. That is called reference power. Charismatic, charismatic is the extension of reference power. Okay. People who bring great reforms and policies like spiritual gurus, they are called charismatic. Charismatic means uh, something, I can say, which is quite different from others. You are having that sort of qualities which individuals are not having. You are, I can say something which is quite different from others. वो बातें, वो चीजें जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं, that is charismatic. You know, इंडिविजुअल पर्सनालिटी एंड इंटरपर्सनल स्टाइल ये सबका अलग अलग है, सबकी पर्सनालिटीज अलग अलग होती हैं, बट क्या सारे सबके पास ही ये चेरिस्मेटिक पावर होती है? इट्स वेरी इट्स वेरी अर्ली टू से कि सबके पास ऐसा होता है, सबके पास ऐसा नहीं होता। जैसे आपके स्किल्स अलग अलग होते हैं, किसी के पास कोई स्किल है, किसी के पास कोई दूसरा स्किल है, ऐसे ही जो चेरिस्मेटिक पावर होती हैं वो सबके पास अलग अलग होती है। जैसे आप देखते हो आपके हीरोज होते हैं, हीरोइक क्वालिटीज होती हैं कि वो बहुत आइडल हैं आपके लिए, आप उनको फॉलो करते हो। तो चेरिस्मेटिक पावर इज लाइक दैट, आप जिसको फॉलो करते हो, आप जिससे कुछ सीखते हो, जो आपको इंस्पायर करता है, दैट इज द चेरिस्मेटिक पावर। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू।